बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, देखिए खंबे पहले तो दिखाती हूँ, अभी भी लगातार जिस तरीके से तेज़ हवाएं यहाँ पे चल रही है, खंबे लगातार यहाँ पे हिल रहे हैं। पूरे इलाके में मांडवी शहर का जो पूरा इलाका है वहाँ पे प्रिकॉशनरी सभी बिजली को काट दिया गया है, क्योंकि कहीं अगर इलेक्ट्रिक पोल गिरता है या कहीं पे भी जो मेन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ट्रांसफार्मर होता है, वो अगर गिर जाता है तो कोई शॉर्ट सर्किट जैसी वारदात हो सकती है। उससे इसी के चलते जब से विंड शुरू हुई है, यानी आज सुबह से ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ़िलहाल काट दिया गया है। लोगों को ये कहा गया है कि कल सुबह ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी, क्योंकि एक बार पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा, कहीं तार कटा हुआ है या कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है जिसके चलते कोई किसी की जान हानि हो जाए। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो की जाएगी और उसके बाद कल से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिस्टोर की जाएगी। और साथ ही अगर मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो मोबाइल टावर्स जो है फ़िलहाल यहाँ पे मांडवी के इलाके में हम मौजूद है, यहाँ पे मोबाइल टावर्स और कनेक्टिविटी सारी मिल रही है। लेकिन जो जखाऊ का इलाका है, चाहे नारायण सरोवर का इलाका हो या फिर कोटेश्वर का इलाका हो, वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसका भी इशू अब धीरे धीरे शुरू हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडफॉल होना शुरू हुआ है, चक्रवात का ये लैंडफॉल है। और देखिए हम मांडवी में मौजूद है, लैंडफॉल हो रहा है, यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर जखाऊ के इलाके में ये लैंडफॉल हो रहा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो मांडवी में भी देखने मिल रहा है। और तेज़ हवाएं चल रही है, 110 के आसपास की जो रफ्तार है वो यहाँ पे तेज़ हवाओं की रफ्तार मानी जा रही है। और उससे जो नुकसान होना है, लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेगी। और ये तेज़ हवाओं का जो दौर है ये देर रात तक चलेगा। कल सुबह इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस हवाओं की वजह से, क्योंकि एक महाविनाशक चक्रवात ये है इसे कहा जा रहा है, तो कितना नुकसान होता है इसका अंदाज़ा कल सुबह जब साइक्लोन लैंडफॉल हो जाएगा, पूरी तरीके से वो आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद ही इसका अंदाज़ा जो है वो यहाँ पे लगाया जा सकता है। प्रीति, गोपी, बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। आई वांट टू कट अक्रॉस राइट नाउ टू जामनगर. Saurabh Bhaktania joining us from there. Saurabh, what are you witnessing right now? The landfall has begun. We're going to continue to see visuals such as this till about midnight, where the landfall will be complete. Once the eye moves in, there will be a lull, is what we are being told. But right now, the periphery of the eye moving in and causing huge amounts of rain, as well as wind speed up to 130 kilometers per hour. So, Preeti, the landfall has started and we are very far away from the exact eye of the center where meets the Gujarat coast. But look at the situation right now. It's very difficult to stand, and therefore I am taking this support of this wall to actually stand over here. Let me tell you that Jamnagar's coastal area are highly affected. I went to few places, Preeti, and several of the trees and electric poles have already fallen. The different teams of NDRF are on the roll along with the Gujarat government officials. They are going to places and actually they are clearing out this debris. And let me tell you, there are several people who are already affected. Most importantly, Preeti, half of the Jamnagar right now is without electricity because the officials did not want to take any chances. Because let me tell you, like the incident which I was reporting just some while ago, that an entire electric pole fall on an house. There were 3 people inside, but luckily all escaped unhurt. But 3 of the cows actually got stuck in the debris. It was a nick of time when the NDRF officials reached over there and they saved them. While I speak, Preeti, there are few people still out on road. It's a difficult situation. The officials are continuously appealing to them that till tomorrow morning nobody should be out of their home. And therefore, let me tell you, in the shelter home, the food supply was already done much in the evening, because after that it will be complete dark situation. Look at the current situation. I'll ask my camera person to show you the panoramic view of Jamnagar here on India Today, that the wind speed is very much high and several of the parts of Jamnagar are highly affected. In the city area, Preeti, let me tell you, several incidents of
tree fall have been reported. There are huge hoardings which are flying in the air. Such visuals are coming in. These are the vehicles of the officials who are continuously patrolling and going to the places where such incidents have been reported. It's a continuous appeal to the citizens that they should not come out of their houses because but it is very risky at the moment. There are several such low-lying areas also, Preeti, where we have been told that there is a waterlogging situation as well. So it is going to be a very difficult night right now with no electricity, and in going to such areas where it will be completely pitch dark, and this landfall will continue for next 4 to 5 hours. So these are the very crucial period right now. You can see through the visuals right now that how the wind speed is. Luckily, there is no continuous rain. There are intermediate isolated rains, but no continuous rain. But the wind speed is very high. So absolutely an appeal on India Today right now to whoever is watching in Gujarat, Western Coast and Saurashtra that nobody should come out of their houses or the settlements which have been made by the government until next morning. All right, Saurabh, stay on with me. I'm going to quickly take our viewers through the latest that is coming. So, cyclonic storm Biparjoy has made landfall, viewers. It began shortly, just about 20 minutes ago. The entire process will continue till about midnight this evening. In terms of, you'll be seeing very similar scenes that you're seeing on your television screens right now, which will last and go on till midnight. What we are expecting, wind speed to go up to 130 kilometers, which as per Met Department is manageable. Till now, what has been recorded is 130 kilometers per hour of wind speed. The storm from yesterday has weakened from a very severe category to a severe storm, a severe cyclonic storm. It has weakened. Having said that, if there is no reason to panic is what is being indicated. If everyone stays at home, stays indoors, this storm will pass without inflicting that much damage to life and property. What one is witnessing, what is being reported right now, especially from the Kutch region, which is facing the maximum brunt of the landfall of the cyclonic storm, is that electric poles are being affected, being torn as the storm tears into the coastline of Kutch, Gujarat. There are temporary shelters that have been ripped away. Boats have been damaged, but till now there is no word or news of any massive damage that has taken place. We're going to cut across to our other reporters right now, getting a sense of what really is going on. Saurabh Bhaktania continues to be with us, as well as Brijesh from Dwarka. Brijesh, we were seeing dramatic scenes from where you are right now in Dwarka. Have things gotten better, or is the wind speed only increasing? See, right now the wind speed is only increasing. The situation is getting worse and worse, and because of the wind speed is increasing up to 80 kilometers, 85 kilometers per hour. So this is the effect of the cyclone Biparjoy, which is coming towards the Gujarat coast, and particularly Kutch, Jakhau port will be affected by this cyclone. So this is the gutty wind right now. The situation is not so normal because the cyclone is this is the most disastrous cyclone of last 50 years as far as Gujarat is concerned. So this is the worst. This is going to be the worst affected area, Dwarka and Kutch. Both the districts will be affected by this cyclone in next 24 hours, because once the cyclone hit the coast of Kutch or the Jakhau port, it will affect Dwarka as well, because Dwarka is adjacent to the Kutch. So this is going to be heavily damaged area, or that's why all the precautionary steps have been taken by the government. The power supply has been stopped. The army, navy, coast guard, everyone is on standby mode. So once the landfall has occurred, and then for next couple of hours, they will wait for which kind of situation is there. If wind speed is increasing to up to 120 kilometers per hour, then that will be difficult for everyone to survive outside their home, and that's why the advisory was given to the people that they should
they must stay at their home. They should not go outside. They should not roam outside because the wind speed will be around 120 to 130 kilometers once the landfall will occur. So this is the situation right now. I'm right now at Dwarka. All the steps have been taken by the government. Now everyone is waiting for the completion process of the landfall. So the rescue operation can be done by that. The disastrous cyclone has reached to the Gujarat. Okay. And how badly All right. Right now, Brijesh, where my colleague Brijesh is standing, viewers, right now, the wind speed there is about 80 kilometers per hour. And even then, you can see how strong it is. And I want to give you a sense because this wind speed from about 80 kilometers per hour will rise to 130 kilometers per hour. Where is Brijesh? Where is he reporting from? Very far from the eye of the storm, viewers. If you look at it, this is where Brijesh is reporting from. This is the path of the storm, and I will just expand it a little so I can show you on where exactly is the eye of 1 second. We're going to just try and fix this, and yeah, there you go. Right. And if you can see, this is where Brijesh is standing, which is Dwarka. This is where the storm is making landfall, which is the Jakhau port area, and that is the eye of the storm. And what one is witnessing is the peripheral area of the eye that is of course going to cause maximum damage. As the eye enters the mainland, the areas such as where Brijesh is standing, which is Dwarka, Nalia, and the other areas, of course, Pakistan area is also the coastline there, which is going to see maximum impact of this. But as the eye moves in, at least where the eye is, there's going to be a lull, but maximum devastation will occur in the area on the periphery of the eye. Till now, the eye is still the storm, or the center of the storm, which is the eye, is still quite away from the mainland. That's why the kind of wind speed that you are seeing right now. Once again, I want to cut across to our reporters as they continue to get the latest. Brijesh, right I said, is standing right here at Dwarka, 80 kilometers per hour. As this eye moves in and makes its way inside, and we're going to show you the path of, or what is the projected path also of the storm in just about a minute. But as the storm makes its way in, where Brijesh is standing right there, we'll see a major gust of wind. So from 80 kilometers per hour, it's only going to rise. Let's cut across back to our reporters. We have Brijesh, who's reporting right now from Dwarka, from Jamnagar. I have my colleague Saurabh Bhaktania as well. But Brijesh, over to you. Everybody from where you are, at least in Dwarka, has been evacuated. They are indoors. What's the sense that you are picking up? We do understand, as per protocol, electricity has been snapped for the next 24 hours. Everyone should have supplies. And once again, we don't want to sound alarmist, viewers. We want to make it clear, if you are indoors, there is nothing to worry about. This is just a severe cyclonic storm. It's weakened in the last 24 hours from the very severe category. If you are indoors, then there's going to be minimal loss of life and hopefully to property as well, because till now the word that we are getting in, temporary structures, electricity poles are the ones that are being impacted. Definitely, Preeti, the things that though cyclone has weakened, or the intensity of the cyclone has weak, but still it will impact because this is the most disastrous cyclone of the last 50 years as far as Gujarat is concerned. So it will damage, it will give the impact, or all the ports which are in the Kutch, so be it Kandra, be it Kandla, be it Mundra, be it Jakhau, or be it Mandvi, so all the ports will be damaged heavily because of this impact of the cyclone, because the cyclone will hit around with 120 km per hour speed. Earlier it was expected to hit by 140 or 150 km per hour. So it has reduced, but still, though intensity has gone down, it will be disastrous for the Kutch and the people of the Kutch, because this will hit with the rain, so there will be flood-like situation, or there will be flood-like situation, and there will be power cuts for long hours. So not for 24 hours, for more than 24 hours, because the restoration process will take time once the cyclone will hit
Kutch, and the impact of the cyclone will stay for almost 6 hours as per the Met Department's prediction. So next 6 hours will be crucial. 6 to 8 hours will be crucial for the Kutch and Devbhoomi Dwarka as well. This is the ground situation, which is going to be very difficult for the people, and that's why they have been advised to stay at home, and they should not move out from the home. All right, you stay on with me, Brijesh. Let's cut across from where Brijesh is standing at Dwarka, which is very far from where the eye of the storm is, or not very far actually, but still a distance away. Someone who's closer right now is my colleague Gopi, who's joining us from Mandvi, and the visuals right behind me are streaming live from there. Gopi, क्या वो सबसे बड़ी जो मुश्किल की घड़ी है वो खत्म हो गई है या अगले 3-4 घंटे क्रूशल रहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगले 3-4 घंटे तक ये जो यहाँ पे तेज़ हवाएं चली है, ये हवाएं चलती रहेगी, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ये अगले 5 घंटे तक, क्योंकि लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन साइक्लोन का जो दूसरा हिस्सा है उसे कहा जाता है, जो पूरा साइक्लोन रहता है, उसकी इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने मिल रही है। आपको दिखाते किस तरीके से, देखिए यहाँ पे होर्डिंग्स जो है वो धीरे धीरे गिरने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेज़ हवाएं यहाँ पे चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पे पेड़ हिल रहा है, इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पे हिल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अब यहाँ पे दिखने लगा है। जो होर्डिंग्स को उतार दिया गया था, लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से ये सारे जो होर्डिंग्स है वो अब धीरे धीरे गिरने लगे हैं। लगातार जो इलेक्ट्रिक पोल हो या पेड़ हो, ये गिरने की खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ तक कि प्रीति, आपको बता दूं कि जो जखाऊ वाला हाईवे था वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल ब्लॉक हो गया है, क्योंकि पेड़ गिरने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, वो होर्डिंग्स हो या बड़े पेड़ हो, वो उखड़ने की खबरें जो है वो अब हमारे पास सामने आ रही है। गोपी बने रहिए हमारे साथ, बस अभी आएंगे जो गोपी or what Gopi was speaking about, because let me take you right back on what she was saying. These are the visuals coming in from Mandvi. These are the visuals where what Gopi was saying, if there have been electricity poles, some of them have been of course torn away. That's a hoarding that has fallen. So till now, temporary structure. One can take heart in the fact that till now the damage has been limited to temporary structure. So this is Mandvi right now. Right in the middle is Morbi, which is seeing massive amounts of rainfall, and you can see that on your television screen, viewers. This is Morbi as well, to give you a sense the onslaught in terms of the tropical cyclonic storm Biparjoy has brought in its wake. But let me also now take you to the third set of visuals right here, and that is Dwarka. Now these visuals are streaming live from Dwarka there. That is where Brijesh is reporting from, seeing maximum full force. You can actually see that, the basic outline of the temple in Dwarka. We're going to show that to you. But in terms of the wind speed, in terms of the rain, what you're seeing on your television screens is dramatic. But once again, at least till now, there has been no loss to life, and where property is concerned, in terms of the worst of the visuals that are filtering in, what we are basically witnessing is that temporary structures, hoardings, have fallen, yes. On the other hand, you've had electricity poles. And these are again, another set of visuals that is coming in this time, and understandably, a lot of temporary hoarding, Mandvi only. These are visuals coming in from Mandvi, temporary structures, hoardings being torn apart by wind, which is right now gusting. Gopi, अगर हम बात करें तो 130 किलोमीटर पर आवर तक विंड स्पीड जाएगी। अभी तक कितनी रिपोर्ट हो रही है जहां पर आप हैं? मांडवी की मैं बात कर रही हूँ, मांडवी की अगर बात की जाए तो मांडवी में जो विंड स्पीड है ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। करीब 110-120 की जो विंड स्पीड है वो यहाँ पे दर्ज की जा रही है। लगातार जो पेड़ है वो हिल रहा है, खड़े रह पाना अब, क्योंकि जो लगातार हवा है वो काफ़ी तेज़ होती हुई यहाँ पे अब दिख रही है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है, साइक्लोन लैंडफॉल हो चुका है और उसका जो पूरा इम्पैक्ट रहता है वो अब यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है।
है। ये मांडवी के आसपास में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से देखिए समुद्र के अंदर भी अगर देखे जाएंगे तो तेज जो लहरें हैं वो उठनी शुरू हो गई है और उसका जो साइक्लोन का इम्पैक्ट है वो अब दिखने लगा है। यहाँ पे खड़े नहीं रह पा रहे हैं, ना ही यहाँ से आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बैनर्स होर्डिंग्स जो है, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, वो यहाँ पे जिस तरीके से हिल रहे हैं, लगातार यही डर रहता है कि कहीं कोई होर्डिंग है वो किसी को चोट ना पहुँचाए, क्योंकि कम से कम हवा की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि नुकसान का अंदाज़ा इस वक्त लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार जो हवा है वो इसी तरीके से तेज़ हवाएं यहाँ पे चल रही है और जो हवा की गति है वो भी करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की नापी जा रही है। तो वैसे में इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि हवा किस तरीके से, हमारे कैमरा पर्सन को कहूँगी कि वो एक साइड पे आ जाए, क्योंकि होर्डिंग्स जिस तरीके से हिल रहे हैं, कहीं अगर टूट गए तो चोट लग सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हवा की गति है वो भी बहुत ही यहाँ पे बढ़ चुकी है। मांडवी के अंदर उसका जो लैंडफॉल हुआ है, भले ही जखाऊ के पास उसका लैंडफॉल हुआ है जो 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन तेज़ हवाएं यहाँ पे देखी जा रही है। इलेक्ट्रिक पोल जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से हिल रहे हैं। होर्डिंग्स जो है उसमें ज़बरदस्त यहाँ पे होर्डिंग्स भी टूट चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये नुकसान यहाँ पे हुआ है। लेकिन रात का वक्त है, वैसे में ये जो साइक्लोन की प्रोसेस है ये पूरी 5 घंटे का लैंडफॉल का प्रोसेस है, तो नुकसान का अंदाज़ा अभी लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चक्रवात ने अपना असर जो है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है। साइक्लोन का इम्पैक्ट शुरू हो गया है गोपी, जो आप कह रही हैं। पर गोपी देखिए, आपने बहुत साइक्लोन कवर किए हैं गोपी गुजरात में। ताउते अगर 2021 में याद होगा, क्या ये ताउते की स्ट्रेंथ पर है या ताउते इससे बड़ा स्टॉर्म था? देखिए, ताउते जब लैंडफॉल किया तो 170 की स्पीड से के साथ ताउते ने लैंडफॉल किया था, और ताउते ने जिस जगह पर लैंडफॉल किया वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। अब कल सुबह इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो साइक्लोन था इसका कितना विंड स्पीड रहा होगा जब इसने लैंडफॉल किया है, और आसपास का जो उसका साइक्लोन का एक पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें कितना विंड स्पीड रहा है। लेकिन देखिए, ये ज़बरदस्त हम कहेंगे, क्योंकि 25 साल बाद कच्छ के अंदर साइक्लोन आ रहा है। इससे पहले 25 साल पहले कंडला में साइक्लोन आया था। कंडला के अंदर 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और उस वक्त जो जिस तरीके से साइक्लोन आया था काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे कच्छ में पहुँचाया था। तो अब कच्छ के लिए ये 25 साल बाद नया दूसरा साइक्लोन आया है, और इस साइक्लोन जो बिपरजॉय है उसमें कितना नुकसान पहुंचा है वो उसका अंदाज़ा कल सुबह लगाया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है प्रीति, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, मांडवी शहर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी को फिलहाल प्रिकॉशनरी यहाँ पे बंद कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर जो इलेक्ट्रिक पोल है वो गिरते हैं या कुछ होता है तो लोगों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। तो वैसे में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों को भी यही कहा जा रहा है कि वो, क्योंकि पहले ही ये प्रिकॉशनरी जो पेड़ है उसे काट लिए गए हैं, साथ ही जो होर्डिंग्स है उसे नीचे उतार दिए गए हैं ताकि वो गिरे ना। लेकिन जो नीचे रखे गए हैं वो भी तेज़ हवाओं के चलते आगे पीछे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हवाओं का इम्पैक्ट है, जो साइक्लोन का इम्पैक्ट है, वो अब यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। गोपी मेरे साथ बने रहिए, बस थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को बताइएगा गोपी, क्योंकि मैं उनको जो दिखा रही हूँ अभी, एक बार जो मैं दिखा रही हूँ हमारे दर्शकों को कि जो path है साइक्लोन का, what is the path of the cyclone, viewers, and we're going to cut across back to Gopi because she's going to give us a larger understanding in terms of where she's standing and what are the cities that are maximum in the wake of cyclonic storm Biparjoy. So what we saw the last time, the eye is now moving in, and that would be the trajectory or the path. Khandwa is going to be bang in the eye of the storm, and then it will make its way from the state of Gujarat as well, and this is the coastline that you can see, which will see maximum impact. Gopi, आप अभी मांडवी में हैं, मुझे जरा ये बताइए, जो मेट डिपार्टमेंट और वही हम दिखा रहे हैं,
कौन सी सिटीज हैं जो बिल्कुल जो ये साइक्लोन है इसके पाथ में आएंगी, कैसे ये प्रोसीड करेगा ये स्टॉर्म? देखिए, ये साइक्लोन जो है पूरे कच्छ डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए वार्न किया गया है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट को रेड अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही द्वारका और जामनगर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को भी रेड अलर्ट में रखा गया है। हालांकि साइक्लोन आज यहाँ पे टकराएगा, लेकिन कल यहाँ पे भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मेट डिपार्टमेंट के जरिए दी गई है। अगर कच्छ की बात करूँ तो कच्छ की सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होने वाला है वो मांडवी से लेकर जो नारायण सरोवर कोटेश्वर का इलाका है वहाँ तक इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, जिसमें मांडवी जो है, मांडवी से बाद आता है नलिया, नलिया के बाद आता है वहाँ पे जखाऊ, जखाऊ से आगे आता है नारायण सरोवर और कोटेश्वर का इलाका। ये पूरा इलाका है जहाँ पे लखपत भी आता है और ये इलाके में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने मिलेगा, क्योंकि देखिए मांडवी में सबसे हम कहेंगे कि सबसे कम असर यहाँ पे होने वाला था, क्योंकि साइक्लोन का पेरीफेरी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे भी देखिए हवा की जो रफ्तार है वो कम से कम 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जखाऊ, जहाँ पे हवा की रफ्तार जो है वो 130 के आसपास बताई जा रही है, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट और 5 घंटे तक ये हवाएं चलेगी, तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। हालांकि जखाऊ को तो पूरी तरीके से जो पोर्ट का इलाका है उसे खाली करवा दिया गया है, लेकिन फिशरमैन की जो बोट्स है वो वहाँ पे रखी गई है। वो जो जेटी का इलाका है जहाँ पे ज़मीनी इलाका आता है वहाँ पे ये बोट्स को रखा गया है। तो ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उससे बोट को भी नुकसान पहुँच सकता है। हालांकि फिशरमैन जो होते हैं कई बार हवा की वजह से जब बोट एक दूसरी बोट से टकराती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जो हमने ताउते साइक्लोन में भी देखा था कि पूरा जाफराबाद का जो पूरा फिशरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो बोट्स लगे रहते थे उसमें भारी नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि हालात ये हो गए थे जब ताउते साइक्लोन टकराया था तो उस पूरे इलाके जो जेटी का इलाका था जहाँ पे कम से कम 500 से ज़्यादा बोट खड़ी थी, तो वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था कि कितनी बोट को कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल गोपी, आपसे जुड़ते रहेंगे। गोपी joining us from Mandvi. Also, you know, like we saw in the path of the storm, the maximum impact is going to be faced in Pakistan. But when we return, we're going to cut across to Jamnagar. These are visuals coming in from Jamnagar. We've been talking about fishermen, most of them still securing their boats, cutting across on the other side to my colleague Saurashtra Bhaktania joining us from Jamnagar. Stay with us. You are watching India Today. Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Muslim traders are fleeing Purola, a town in Uttarkashi, after hardline Hindu outfits set a deadline for their exit. Hindu right-wing groups took out rallies after an alleged abduction of a Hindu woman by 2 suspects, including one from the Muslim community. Shops of Muslim traders were vandalized by crowds raising slogans of Jai Shri Ram. The Hindu groups are alleging love jihad and land jihad in Purola. बाहर से जो लोग आ रहे हो यहाँ पे स्थानीय लोगों के लव जिहाद लैंड जिहाद की जो घटनाओं के लिए उनका एक सोची सारी जो उनके योजना के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, इसी का ये कारण है जो आज बड़कोट में स्थानीय पुराने लोगों को भी आज वहाँ से बड़कोट छोड़ना जा रहे हैं।
Local Hindu groups have called a Mahapanchayat on June 15 to protest alleged love jihad. The Uttarkashi district administration held a meeting with villagers but failed to convince them to call off the Mahapanchayat. The authorities have not given permission for the gathering. जो काम प्रशासन और पुलिस को करना चाहिए, आज वो काम जो है बजरंग दल कर रहे हैं। भाई एक वातावरण बनाया जा रहा है क्योंकि 2024 हमारे सामने है। 24 हम कैसे जीतें, उसके लिए भाजपा और आरएसएस का जो एजेंडा है, उस एजेंडे के अनुरूप चल रहे हैं। Some Muslim bodies in reaction have called a Mahapanchayat on June 18 in Dehradun. Chief Minister Dhami assured proper law and order. कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है। The police are holding peace meetings with both communities in Purola. Additional forces are deployed for protection of Muslims. Bureau Report, India Today. Powered by The world comes together at Sharda University. Tata Altroz. OMG, it's the Altroz iCNG. Bajaj Allianz Life Diabetic Term Plan. Welcome back. You're watching our rolling coverage as cyclonic storm Biparjoy makes landfall off the coast in Gujarat, where especially the Kutch coastline is concerned. Not very far away from there is my colleague from Jamnagar, and these are visuals streaming in Jamnagar. What you're seeing, these are fishermen trying to secure their boats because understandably maximum damage is predicted to fishing vessels, boats, temporary structures, trees, as well as electric poles. Joining me is Saurabh Vaktania. Saurabh, the wind speed really since the last time we spoke with you has picked up. What are you reporting? Well, Preeti, even now the wind is blowing at a very high speed. Just look at the visuals behind me. We are in the wet area of Dwarka and the wind speed is continuously increasing, and what the officials have told us that this will continue till next 3 to 4 hours. I went to few of the places also, Preeti. I saw that the people have actually got something from the 1998 which the cyclone was, and where thousands of people from Kutch had died. So when I went to the one village over there, what they did is, Preeti, they have tied up the ropes in the entire village, and all those ropes actually lead to the safer places, the government place shelter homes which have been made. So what they do is they tie a rope to you, and then through that rope you go to the safer house. Then entire village, it's around 1,500 people who stay in that village, and all are fishermen. They have tied their rope, tied their boats with a rope in the coastal areas, and in their village they have made a huge circumference of a ropes, and through ropes people have been evacuated to the safer place. So such is the situation right now on ground. The officials have clear warning that nobody should come out. What I am learning from NDRF team and the government official is that right now there are so many of the calls and reports that trees have fallen down, electric poles are down, and also several of the hoardings have fallen down. We have also been told that several of the trees have fallen on houses as well.
there have been some injuries which have been reported, but the ascertain to what has been the severe damage or what is the damage has been done in Jamnagar, only tomorrow morning it will be known. And it is very difficult situation right now because slowly it has started to rain also, Preeti, and the wind speed is still very high. The officials are telling us that entire night such will be the situation here in Jamnagar. You can understand that how this gusty winds are actually very dangerous for the people, and now with heavy rains right now, it's a very difficult situation. The officials and the NDRF team are continuously on the ground. They are patrolling different areas, and now here you can see that how the winds are blowing, and also the rains have also started. So it's a very difficult situation, a very difficult night for the people of Jamnagar, where different incidents have been reported. But government of Gujarat has learnt a lot from Taukte, let me tell you, Preeti, because Taukte was much severe than the current cyclone. मेन काम था जो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है साइक्लोन से पहले की तैयारी जी। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत व्यापक तौर पे तैयारी की गई है, करीब 1 लाख से ऊपर लोगों को सेफ शेल्टर होम में भेजा गया जो कि इस चक्रवात से प्रभावित हो सकते हैं। और कई चीज़ें साथ में की है कि जो फिशरीज डिपार्टमेंट या बोट सी में जाते हैं उनको बंद कर दिया, उनको वापस तटीय क्षेत्रों में डॉक कर दिया ताकि वो ऊपर नहीं जाए, और होर्डिंग्स है वो हटा दिए गए हैं। जो लो लाइंग एरियाज है जहाँ फ्लड होने की संभावना वहाँ से लोगों को हटा दिया गया। तो इन सब तैयारियों के कारण उम्मीद है कि कोई जान की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए जी। सर कल का क्या है, कल साइक्लोन के बाद क्या रहेगा आपका? तो जो साइक्लोन का भी प्रोजेक्शन है कि जैसे जैसे अंदर आता जाएगा वीक होता जाएगा, तो होपफुली 12-1 बजे के बाद और वीक हो जाना चाहिए। राजस्थान में होगा, लेकिन बारिश की चेतावनी जरूर है कुछ एरिया में, साउथ राजस्थान में, गुजरात में, कच्छ के एरिया में। तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं कि बारिश कितनी होती है, उससे फ्लड का क्या सिचुएशन होता है, तो उसको हम देखेंगे किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इवनिंग में हुआ है, तो रात में आपकी टीमें कैसे वो काम करेगी, क्या चैलेंजेस होंगे? तो जब साइक्लोन का इम्पैक्ट होता है तो रिपोर्ट्स आनी शुरू होती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम काम करता है जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोल करते हैं, और उसी के साथ हमारी टीम इन्वॉल्व रहती है। तो जिस तरह की एडवर्स रिपोर्ट जहाँ से आएगी और ज़रूरत होती है NDRF टीम की, SDRF टीम की और भी गवर्नमेंट मशीनरी की, तो टीम वहाँ जाके अगर लोग फंसे तो उनको इवैक्यूएशन में हेल्प करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह से डेवलप हो रहा है जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिन में तो विजिबिलिटी होती है, लेकिन नाइट में तो लाइट भी नहीं है अन्य शहरों में जहाँ पे लैंडफॉल हुआ है, तो वहाँ पे आपके लिए क्या वो तो इसमें देखिए जो गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं, हैवी टॉर्चेज होते हैं जिनकी रोशनी अच्छी होती है। तो चक्रवात के पे भी डिपेंड करता है कि कितना डेंजरस है। ज़्यादा डेंजरस है तो टीम भी सेफ रहेगी, उस हिसाब से उनको स्पॉट पे डिसाइड करना। लेकिन लाइटिंग का, आर्टिफिशियल लाइटिंग का अरेंजमेंट रहता है। हमारे पास LEDs लाइट होती है, टावर लाइट्स होती है, अगर ज़रूरत है तो उसको यूज़ करके हम रात में भी काम करते हैं। तो लाइटिंग के कारण, अंधेरे के कारण हमारे बचाव कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। IMD से सर आपकी क्या बात हुई है, क्या वो आपको अपडेट किया? IMD अपने वेबसाइट पे पीरियोडिक असेसमेंट करके फोरकास्टिंग करते जा रहा है, क्योंकि अब चक्रवात लैंड जमीन तटीय क्षेत्र में घुस गया है। तो अभी 6:30 बजे उन्होंने एक असेसमेंट भेजा जिसको हम देखते रहते हैं। उस हिसाब से भी स्टेट गवर्नमेंट और NDRF अलर्ट रहती है जी। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। तो Alright, you just heard the NDRF chief there stating very clearly that till now there has been no loss to life. Sporadic incidents have been recorded where trees have fallen on homes. There have been injuries reported. Temporary structures have been torn as the cyclonic storm Biparjoy has slammed into the Kutch coastline. We're going to get you the latest. Our reporters spread out, picking up as the storm makes landfall. The next couple of hours are crucial. Once again, there's no need to panic. We don't want to sound alarmist at all. It is a cyclonic storm, which from very severe has now been downgraded to a severe cyclonic storm. But trust us to get you the latest visuals and the latest reports and the best vantage positions as we record the trajectory of this storm as it makes landfall and moves inwards. A quick break to stay with us. On the other side of Rahul Gandhi.
Two advertisements within a space of 2 days reveal the tension within the BJP Shiv Sena coalition in Maharashtra. This ad that appeared on Tuesday featured Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Eknath Shinde. It said, Modi in Rashtra, Shinde in Maharashtra. There was no mention of Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. It also claimed that Shinde was more popular than his deputy, based on a recent survey by a private agency. The advertisement caused much resentment in the BJP. Shiv Sena soon got into damage control mode, clarifying the ad was issued by a supporter of Shinde. A day later, a new advertisement appeared, this time featuring photos of all leaders including Shinde and Fadnavis. शिंदे जी उत्कृष्ट आहेत पण त्यांनी देवेंद्रजी त्या ॲडव्हर्टाईजमध्ये कंपॅरिझन करणे हे ज्यांनी कोणी केलं असं मला वाटतं. एकनाथजी काही एवढ्या लहान मनाचे नाही आहेत. एकनाथजी काही लहान मनाचे नाही आहेत. एक मोठ्या विचाराचा मोठ्या मनाचा माणूस आहे. एकनाथ शिंदेला जे बघतो ते कधी अशा लहान विचारात वावरत नाही. पण ज्यांनी कोणी केली आहे त्यांनी देवेंद्रशी कंपॅरिझन एकनाथजी सोबत करणे हे थोडंसं त्या ठिकाणी अचंबित करणारं होतं. The damage control, however, has not yet ironed out the differences between the two leaders. The Deputy Chief Minister has skipped events where he was supposed to share dais with Chief Minister, citing health reasons. Fadnavis, however, continued with his regular meetings at the Shahayadri Guest House in South Mumbai. With Ritvik Bhalekar, Bureau Report, India Today. Absolutely right. We're picking up from our finance ministry sources that disinvestment of container corporation, that is Concor, has hit a roadblock. In fact, this was in the offing because the government was expected to launch the expression of interest by January, that is of 2024, but as per finance ministry sources, the government may not be able to go ahead with the process in this fiscal year of 2023-2024 because of certain issues that they are facing from the railway department in terms of bringing a new investor on board. The cabinet had given a nod for 30.8% of government stake to be sold in Concor. Government holds about close to 55% stake, and this definitely puts on a lot of plans of government's disinvestment target, which is close to 51,000 crore for this year, because Concor was contributing about close to 20 to 22% in order to fetch about 12,000 crore with its 30.8% sale. Sorry.
Presented by RP Sanjeev Goenka Group, Growing Legacies. Powered by NECC, Sunday hoya Monday, Rose Khao Ande. Good evening and welcome. You're watching the news track. I'm Rahul Kamal. Cyclone Biparjoy has hit the coast of Gujarat. On the news track tonight for the first half an hour, we'll be looking at the progress of the cyclone. These are live satellite images which give you a sense of how this cyclone is raining its fury currently in the areas of Dwarka, Mandya, Nalia, Jamnagar, Gandhidham. And as I scroll forward on the timeline, you will see how this cyclone will keep moving further inwards. This is what's likely to happen late tonight, where the cyclone moves much further into the Kutch, Saurashtra area of Gujarat. And then let's take a look at what happens in the morning. These are the images expected in the morning, where the eye of the storm comes in much further. And as the day wears on tomorrow, the cyclone will keep going further into the heartland and its intensity will keep coming down. So we're tracking Cyclone Biparjoy. Our reporters literally in the eye of the storm, getting us live, continuous updates from the coast of Gujarat. We're also tracking what's happening elsewhere. All of that coming up on the news track. Turbo winds and rain. Turbulent seas. In fact, look at the wind speed. It is very difficult to even face this. किस तरीके से हवा की रफ्तार यहाँ पे चल रही है, हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। लगातार आप एक बिल्डिंग के सामने आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना, आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। 8 other states on high alert. Cyclone Biparjoy landfall. Big focus on news track. I'm going to go across to our reporters who are in the eye of the storm. Before that, here's a look at the headlines I'm tracking tonight. Cyclone Biparjoy makes landfall. Wind speed and rain expected to intensify. Landfall will continue till midnight. 2 dead in the Panchayat poll clashes in West Bengal. Open firing in North Dinajpur. More live bombs recovered. Calcutta High Court pulls up state poll panel over violence. Karnataka government drops chapters on RSS founder Hegdewar and Savarkar from school textbooks. Anti-conversion law also repealed. Delhi police recommends cancellation of Foxco charge against WFI President Brijbhushan, but he's charged with sexual harassment, stalking and outraging women's modesty in the case relating to 6 other wrestlers. India set to get at least 18 Predator drones from the United States. Second mega defense deal after the GE 414 fighter engines will be signed during Prime Minister's US visit next week. Cyclone Biparjoy has made landfall in the coast of Gujarat. High winds and waves have been lashing the coast of Gujarat all day today. Here's a look at some of the pictures captured by India Today cameras. Biparjoy landfall currently underway. The cyclone hit Saurashtra and Kutch. These are the images from Morbi of the moment Biparjoy made landfall. Wind speeds touched 130 kilometers per hour. The landfall will continue till midnight. The town of Devbhumi, Dwarka, dramatic scenes witnessed as Cyclone Biparjoy swept away everything in its path. A few people that were out were seen struggling to walk. The impact of cyclonic winds was so strong in Mandvi that an electric pole fell down. Street lights on the road were shaking. Hoardings were ripped apart. Several trees were uprooted and roads caved in the Jamnagar area in the western coast of Saurashtra.
Although landfall has started, wind speeds are yet to peak. Close to 1 lakh people have been evacuated. Teams of the National Disaster Relief Force, the State Disaster Relief Force, the Army, the Navy, the Air Force and the Coast Guard are on standby. Ashutosh Mishra joins us live from Mandvi. He's been reporting literally from the eye of the storm. Ashutosh, everyone across the country right now very concerned about where you are in Mandvi. Take our viewers through what you're experiencing, Ashutosh.